So let's understand the concept of an up move. Okay, तो concept of an up move के point of view से what we are looking at के जो swing low है वो always swing high को तोड़ता है. Do you agree on this? Correct? ये high को तोड़ के ऊपर जा रहा है. And this basically represent an up move. This represent the up move. Correct है? So again, suppose if we consider this as a low, okay, ये हायर लो बन जाता है, ये हायर लो बन जाता है. So technically we are in the up move. Clear on this? Any questions? Any questions? So we have understood कि market exactly कर क्या रहा है in terms of how the things are progressing as far as the current scenario is concerned or the last 5 days is concerned. Okay, so let me share. Just a minute. Just give me a second, please. Okay, so अगर हम लोग चार्ट के ऊपर देखते हैं, कैन यू एवरीबडी कैन सी द चार्ट? प्लीज गिव मी अ थम्स अप और जस्ट कंफर्म करो. Yes. Okay, great. So now we are looking at the bank nifty. When we are looking at the bank nifty, okay, let it update, please. So as far as the bank nifty is concerned, what we are looking at, okay, previous low मिल रहा है, right? So suppose considering this as the low, this is higher low, right? And this is also higher low. अच्छा, everybody has got a book and a pen with them? अगर नहीं है तो प्लीज जल्दी से लेके आइए प्लीज. Yes, sir. Great. So now in this case also we are looking at a previous low and a previous low, right? ये कल हम लोग ने बात की थी. So technically we are seeing a price going up, retracing, price going up, retracing, price going up. Correct है? So this is basically getting represented by a up move, right? So as we saw that the up move is getting represented by a higher low, and अगर ये high है तो ये higher high है, right? So this is the basic understanding of the up move. Any questions on this? Anything you would love to understand? Right? So in this case, what we now need to do is we need to understand कि ये कौन से टाइम फ्रेम में हो रहा है. ये कौन से टाइम फ्रेम में हो रहा है. तो टाइम फ्रेम का मतलब क्या होता है? टाइम फ्रेम का मतलब क्या होता है कि वी वांट दिस टू for our advantage, whether we are able to see this in terms of how the things are going to function. Correct? So in this particular case, let's start with a weekly chart. This is a weekly chart of Bank Nifty. तो आज जो दिन है
वो 25th of July है. Okay, so now if I draw few of the lines for you to understand is कि हम लोग ने ये लाइंस को ड्रॉ किया था, कहां से रेजिस्टेंस हो सकता है, कहां पे सपोर्ट हो सकता है, राइट. So we had drawn few lines over here, and as we have drawn the lines, okay, as we have drawn the lines, what is very important is to understand what the lines have actually done. So this was the high previous initial, and then this was the high. So now we are seeing that it is actually ready to touch this particular thing. Now will it go up? तो अगर वो ऊपर जा रहा है, right? So this 37,000 is going to be a strong resistance round number के point of view से, and anything above that we are going to see a very good momentum. If we see a upside momentum from 37 to maybe 3800 to 200 points, 300 points का एक strong momentum हो सकता है, right? So I am just trying to find out till कहां तक जा सकता है. तो ये 38,089, 38,100 का एक मोमेंटम हो सकता है अगर द मोमेंटम कंटिन्यू रहता है. तो यहाँ पे हम लोग ने क्या देखा है, यहाँ पे क्या देखा है कि यहाँ पे अपमूव हुआ, पॉज किया, अपमूव हुआ, पॉज हुआ, एंड देन अपमूव हुआ. लेकिन आपने देखा कि एवरी टाइम द प्राइस एक्चुअली गोज डाउन बिफोर द अपमूव इज हैपनिंग. Price goes down before the up move is happening, right or not? So how do you catch these things and how do you process this thing? अभी आज सुबह को कैसे ओपन होगा, क्या होगा? तो what we normally do is we go to the Asian markets, what the markets are doing, okay, and then we find out in terms of what is the scenario as far as the world market is also concerned. तो technically हम लोग का जो निफ्टी है वो सिंगापुर में लिस्टेड है, which is called as the SGF Nifty. Which is called as the SGF Nifty. तो जनरल आइडिया आता है कि if this is positive, okay, तो even if our market starts negative, this is probably going to go up, or we are going to see a gap up opening itself. So what everyone as a trader needs to do is कि सुबह को इसका खाली एक सेकंड लगता है to study what the SGF Nifty is also doing. So this is as far as the Nifty is concerned. Okay, nothing to do with the overall market, nothing to do with Bank Nifty, blah blah blah. लेकिन ये is a Nifty. करेक्ट है? So weekly में we are seeing the up move over here. Clear है? So momentum is up. अभी यहां से क्या होगा is a thing which we need to do कि ये वीक में क्या हो रहा है. तो we come to a daily chart. So daily chart में we are seeing this कि यहाँ पे एक resistance दिख रहा है, but once this resistance is going off, then there is a possibility of the price going further high. अभी on a daily chart अगर हम लोग स्टडी करते हैं तो suppose this is the low, higher low, and a higher low, right? So in this case also we are seeing an uptrend. Everybody clear on this? Everybody clear on this? Any questions? Please unmute and ask in case you have a question. Okay. So when we are looking at now, this was the high. This created a new high. This created a new high. And now this is the high, higher high. So technically, if this is the high, ये higher high हो गया. Okay, ये higher high हो गया. Representing an up move. Representing an up move. लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हो कि it is not in a straight line. ये ऊपर नीचे होते रहता है.
ये ऊपर नीचे होते रहता है. And this is where you need to understand that market is not going to go in a straight line. Market is not going to go in a straight line. ये ऊपर नीचे होता है, and that is where the mindset of a trader needs to be developed. We need to understand how to go about the whole thing. Now, let's understand the scenarios. कि इसके यहाँ पे क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है. Okay, so we go to a little smaller time frame, maybe a 60-minute chart. So I'll remove all the tools over here. Okay, but just to show you what it has done and how it has gone about. Okay, in the last 5 days. So again, low, again a low. Okay, ये वाला low definitely, and then slowly and steadily it has picked up. यहाँ पे देखा, opening was at the bottom only to see the price going up. Okay, so this is our 240 wala lines. This is our 240 wala lines. This is what the pivot. Every low or every swing we can say is your pivot. Pivot. Correct? So in this case, what we can see is the last 4 candles ka pivot. The last 4 candle ka pivot we can catch up. So what is this? 36,600 ke aju baju. Now, if we see in the morning a gap down and maybe a green color candle of first 5 minutes, so this can be kept as your pivot, and then again slowly and steadily price going up. Or if we see a continuation of the 5 minutes, then this will act as a resistance for the price to go up. That means the price wants to now go down to go down. Now let's see till where it can go down and from where it could turn. Okay, very important. And we will understand the components of so यहाँ पे मैं एक लाइन बना के रखता हूँ 36,595 के बाद में we will may see a sell off coming in case there is a gap down or the price trying to go down. The next level is 36,420 ka level, and the third level is 36,250 ka levels. So you have the downside ka levels, the 36,590, the 36,420, and the 36,250 ka levels. Okay, so this is where you may find a maybe the reversal coming in. अभी के लिए हम लोग खाली levels को ढूंढ रहे हैं. Now what happens if there is a gap up opening? अगर we see a gap up opening, maybe 200 points का gap, तो 36,900 के आजू बाजू gap up open होता है तो क्या हो सकता है? तो our levels on the upside, okay, could be 37,900 से लेके 37,125 and anything above 36,170, 180 के बाद में going right up till 250 levels. Clear on this? Okay, so this is how we can catch the levels. So ये levels के बारे में बात किया. अभी यहाँ पे trading कैसे करेंगे? And this is the main important point as far as the trading is concerned. कि यहाँ पे करना क्या है? Buy करूँ तो कहाँ पे करूँ? Sell करूँ तो कहाँ पे करूँ? तो there are rules for the trading purpose. Okay, so वो particular rules आपको समझना पड़ेगा कैसे, how to go about this particular thing. And then there is the algo tradings which are working. Okay, so what are the algo tradings? It's a automated trading systems which the software itself gives a buy and sell signal.
So one of the component of the algos are the pivot levels. Now, what are the pivot levels? How do you calculate all these things? So जो मैंने levels आपको लिखा के रखा है, okay, whether the computers are having that particular levels or not, we will find out. So यहाँ पे आपको क्या करना है? Okay, you go to your daily charts. Okay, you go to your daily charts, and यहाँ पे you add a study called as the pivot study. You add a study called as a pivot study. ठीक है? So daily chart में we are adding a pivot. Now in this case you cannot see the pivot, right or not? You cannot see the pivot. Not to worry. You go to your weekly chart and again add your pivots. So, sir, can you please repeat this Yeah. part? Okay. So what you need to do is कि हम लोग ने तो लाइंस बना के रखी है. Now the computer, is it able to identify or what the computers के हिसाब से where is the resistance and where is the support? Okay, तो एक calculation है which is called as pivot calculations. Okay, तो pivot calculations में we are trying to find out what the computer is able to do. Okay, what the computer का जो levels है, we will take pivots in details. लेकिन pivots हमको ढूंढना पड़ेगा. तो on a daily chart, weekly chart, we put a daily का pivot, and this is where your pivot lines are coming in. तो अगर आपने मेरे जो लेवल्स लिख के रखे हैं, ओके, मेरे जो लेवल्स लिख के रखे हैं, वो लेवल्स में 36 150 वाला लेवल्स आया है, 37 वाला 37 400 वाला लेवल्स आया है. अगर नहीं आया तो आप लिख के रख दीजिए. Now this is what we call as what the computer is calculating. Okay, so now for us 36 150 is going to act as a strong pivot. 36 150 is going to act as a strong pivot, and we have a system wherein we trade the 150 wala rule also. Okay, but not the right time, but definitely we have a system based on the 150 wala rule. Okay, let's go to a little smaller time frame. Okay, daily से नीचे जाते हैं. तो I wanted कि भाई मुझे मेरे जो levels है, whether my levels are at the right place, right time. So here you can see the 36 140 वाला thing, 150 वाला pivots, और यही जगह पे हम लोग ने डिमांड जोन ड्रॉ करके रखा है. यस और नो? यही जगह पे हमारा डिमांड जोन हम लोग ने ड्रॉ करके रखा है. अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, टेक्निकली अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑफ 36 150 वाला लेवल. सो वी आर एट द राइट प्लेस, राइट टाइम, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल. और दूसरा जो रेजिस्टेंस आपको मैंने बताया, अ राउंड फिगर वाला रेजिस्टेंस, राइट, is the 37. यहाँ पे 36 980 है, and I gave you the number 37,000. So 10-20 points here and there doesn't make any difference. But are you able to understand the concepts, the learning, the understanding of how the things are functioning? Right? Right. And the next is 36 550 levels. राइट, तो ये छोटे टाइम फ्रेम का सपोर्ट 36 560 लेवल्स, 550 लेवल्स. ओके, सो वी हैव द रेजिस्टेंस ऑन द टॉप जहां से प्राइस मे नॉट गो अप, एंड वी हैव द सपोर्ट यहां से प्राइस मे नॉट गो डाउन. बट अगर ये लेवल को तोड़ता है तो वी नो अवर अदर सपोर्ट ऑल्सो. सो टेक्निकली इफ यू आर यूजिंग अ पिवोट, will we not come to know the lines and everything? समझ में आ गया? समझ में आ गया? आयुष, clear on this? Arfin, clear on this? Yes. Okay. Yes, sir. So, Sunil ji, Vishwanath,
Vrinda ji, Yes, sir. clear Clear. on this? Yes, sir. So now I will change my time frame to a 60-minute time frame. तो अभी थोड़ा पिक्चर बेटर लग रहा है, Yeah. right? So what was our level? What was our level? And this is almost the same 36,550 वाला levels. Correct है? Right? Now a gap up opening. Now what? अगर गैप ओपन खुल जाता, then this यहां पे this will act as a support. अभी ये, if we look at this is almost like a flagpole formation. Yes or no? Yes. अगर यहाँ पे नीचे खुल के ऊपर चले जाता है तो हमारे लिए सबसे बेस्ट ट्रेड यहाँ पे हो सकता है. अगर यहाँ पे anywhere it opens flat and then it starts to move up. Now if it opens flat and starts to go down, you know your levels where to sell also. So this is the understanding of how to go about looking for a clear understanding of where the levels are. Okay. So in case of a 60 minutes pivot के point of view से, this is your first, this is your second, okay, this will be your third, and now this will be your fourth. But is it going in a straight line? Straight सीधा सीधा ऊपर थोड़ी जाता है. तो ये नीचे भी जाता है, ऊपर भी जाता है, नीचे भी जाता है, ऊपर भी जाता है. लेकिन please remember, if the price is dancing for some time, I want this dancing to happen. I want this dancing to happen. Why? Because the trend will be confirmed once the dancing is over. Either upside or maybe the downside. Clear on this? So, Mayur sir, in this case, 36,591 and 36,768 इसके बीच में डांसिंग हो रहा है, तो हमें ट्रेड नहीं लेना है. नहीं लेना है. करेक्ट. परफेक्ट. 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 ओके. सी आधे के टाइम पे तो हम लोग उधर ही जीत जाते हैं. When you know when not to take a trade. Yes or no? Yes. Because यहाँ पे हम लोग इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा. You don't know where it is going to go. So we want to be in the player game. ये जब भी ऊपर जाएगा तभी मेरे को बाय करना है. अगर नीचे जाने वाला है तभी मेरे को सेल करना है. Are you with me on this? Yes. So 50% of the time we are just waiting for the right opportunity to take the trade. And then we have a system. सुबह को अर्ली मॉर्निंग ट्रेड्स कैसे उठाना है, 10 मिनट का रूल है, 45 मिनट्स वाला रूल है. ओके, वो रूल हम लोग सीख सकते हैं, लेकिन अभी पहले हमको कॉन्सेप्ट सीखना है. ओके, व्हाट फर्स्ट यू नीड टू आइडेंटिफाई व्हाट इज द मार्केट डूइंग. ये स्ट्रक्चर पहले समझ में आ गया? एवरीबडी एबल टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर? Yes. Any questions as far as the structure is concerned? Okay, so let me now take you to a smaller time frame. Okay, maybe we will look at 30 minutes. तो 30 मिनट्स में भी स्ट्रक्चर क्लियर हो गया. अभी वो क्या कर रहा है? डांसिंग कर रहा है. 30 मिनट्स का जो जोन है वो कौन सा जोन है? क्लियर ऑन दिस? लेकिन आप यहां पे देखिए, व्हाट आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू, द कॉन्सेप्ट वाज कि मुझे नहीं मालूम है तो क्या करना है? वेट करना है
and the price goes up, you make your money. Clear on this? Yes. समझ में आ गया बात? So we are going to learn about this concept, how to go about it. 3 महीना आप मेरे साथ में रहने वाले हो, ओके? और ये 3 महीने में we will take live trades also. Live in the market हम लोग ट्रेड करेंगे. Because see, अभी ये एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली सिस्टम कैसे चल रहा है. Clear on this? Yes. Any questions? Please. SGX कहाँ पे फाइंड आउट करना है? Good, very nice question. तो आपको क्या करना है? Let me share. SGF क्या कर रहा है और कैसे करना है? Let me share. Just give me a second. ओके, तो SGF निफ्टी को फाइंड आउट करना है. ओके, तो क्या करना पड़ेगा? आपको सिंपल सादा मनी कंट्रोल में जाना पड़ेगा. ओके, एंड मनी कंट्रोल में यू गेट योर ग्लोबल इंडाइसिस. You get your global indices. Everybody able to see this? Yes. Okay, तो SGF निफ्टी क्या कर रहा है? Going to open with a minus 40 points. ये SGF निफ्टी अभी 40 points minus चल रहा है. Okay, and you are able to see Nikkei, Straight, and Hong Kong, Taiwan market में क्या हलचल हो रही है. So technically we are seeing a mix of market but not so good. Yes or no? Yes. So what do you expect from this particular market? Who can tell me? It will be either sideways or down. Or down, right? Sideways to down. Okay. Now, please remember, SGF Nifty is technically where all the world is seeing. और हम लोग तो इंडियंस है. अगर ये गैप डाउन खुलता है 40 पॉइंट्स के हिसाब से, ये गैप डाउन खुलता है. ओके, एंड इफ दिस इज नॉट गोइंग बिलो दिस, तो कैन वी सी अप मूव वंस अगेन? हेलो, या देखो, जब तक आप मेरे साथ में बात नहीं करोगे, आपका दिमाग चलाना शुरू नहीं करोगे, काम नहीं होने वाला है. Everybody needs to participate. जब तक आपका पार्टिसिपेशन नहीं होने वाला है, आप इंडिविजुअली आप एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है. डोंट बी अफ्रेड इफ यू आर रॉन्ग. डोंट बी अफ्रेड. शर्म नहीं रखना, बट आप बात करिए एंड देन यू विल रियलाइज, अच्छा मेरे को ऐसा सोचना है, मेरे को ऐसा सोचना है, मेरे को ये तरीके से मेरे को एक्शन लेना है. बिकॉज व्हेन यू विल बी अलोन इन द मार्केट, you will have to take trades based on your own analysis. Sunil ji, Vishwanath. Yes sir. So for Yes sir. gap down अगर open होता है, तो it is good or bad? Definitely good ना, because we may find के ये सीधा सीधा यहाँ पे ही खुल गया, तो यहाँ पे तो अपना पिवोट है, तो यहाँ से धीरे धीरे करके भी वापस ऊपर जाने की कोशिश करेगा. Okay, so this is the mindset we need to develop. लेकिन what happens if नीचे खुल के it continues the journey down? For that we will have a system in place wherein अगर ये नीचे खुल के is it going to continue remaining down? Yes, of course. ये भी एक possibility है. So this is a 30-minute chart. I will shift my chart to 15 minutes to 10 minutes. We are using 10 minutes instead of 15 minutes. So let's understand this. Okay. So in the 10 minutes के chart में you are seeing
price is holding and then the breakout comes in. Okay, the price may breakout has come in. Now it has done the dancing over here. Now we are seeing a gap down open. Okay, maybe, लेकिन अपना market maybe if it opens over here and continues to move up, then it's perfectly all right. So don't interpret. हम लोग को क्या करना है, अपनी सोच कैसे करनी है? We just need to be prepared for the moments to come in. So where will be the pivot? This is the pivot, last pivot. This is the last pivot. This is your pivot and this is your pivot. So now you know your resistance levels. यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे. Correct? Now if it needs to change direction, that means ये 10 मिनट के कैंडल इसके नीचे चलना शुरू करेगा. Then we are seeing price going down. Or it is going to do a dancing over here. Clear? I have, see, since we have just been there for almost only 2 days, okay, there is no recommendation to buy or sell anything. Just focus on the learning, okay, and understanding the concept correctly. Okay, and trades will come in, don't worry. 30 days में बहुत सारे almost 3 months में बहुत सारे trades मिलने वाले. So first concentrate on the concepts and understanding how to find the pivots, how to find the trades, how to find the structure of the market and all that. Any questions? Ayush, Vishwanath? No. Clear, sir. Clear hai? So I am removing the lines right now for the picture to be very clear. Okay. And ये आपको बार-बार करना है. Okay. So you need to have your vision which is very clear कि भाई वो कहाँ पे रुका है और कहाँ से कहाँ पे जा रहा है. तो अभी के लिए ये सपोज ऊपर जा रहा है. तो ये ट्रेंड कहाँ पे तोड़ेगा? If it spends some time over here and then when it breaks the trend, then maybe the structure will change. Clear on this? Any questions? So if I look at the 60 minute, the structure is on the up move, right? लेकिन अगर ये नीचे खुलता है, and is it going to continue down? If it is a bear market, yes, possible. But if it is a bull market, तो यहाँ से फिर से ऊपर आना शुरू कर देगा. Correct. So आज का लर्निंग क्या हुआ कि एसजीएफ निफ्टी को कैसे देखते हैं, राइट? वर्ल्ड मार्केट क्या कर रहा है, एशियन मार्केट क्या कर रहा है, उसको कैसे देखते हैं और स्ट्रक्चर को कैसे फाइंड आउट करते हैं और पिवोट्स को हम लोग कैसे देखते हैं एज अ रेजिस्टेंस एंड एज अ सपोर्ट लेवल. क्लियर ऑन दिस? Yes, sir. For the clear. Yes, sir. सुनील जी क्लियर? निमेश? Yes, sir. अरफिन जी? Yes, sir. Yes, sir. Great. Then I'll see you tomorrow morning 7:30 once again. Okay. But please, 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 जो लोग टीचेबल पे है, जाके इनसाइड कैंडल 10 मिनट्स वाला रूल, 45 मिनट्स वाला रूल, ये आपको स्टडी करना पड़ेगा. ओके. एंड सिंपल सादा पहले तो लाइंस बनाना शुरू करो. सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाली जो लाइंस कल हम लोग ने जो सीखी है, हाउ टू गो अबाउट ड्राइंग द लाइंस, ये लाइंस को आप बनाना शुरू करिए ऑन योर चार्ट्स एंड देन वी विल टेक दिस फॉरवर्ड. ओके. Any questions? Anyone has? All clear. All clear on this? Sir, one question. Yeah. This line we go from weekly to daily to 40 ऐसे करके जाते हैं. Right. तो like for if we go to 30-minute chart, वहाँ भी हमें different lines बनानी है या one day की जो charts है 240 minutes की chart है वही? Right. Okay, fine.
30 मिनट्स का लास्ट लाइन, इससे नीचे जाना नहीं है आपको, ऑटोमेटिकली आपको लेवल्स मिल जाएंगे, डोंट वरी। ओके, यू हैव टू जस्ट फाइंड द लेवल्स, डोंट वरी ऑन द स्ट्रक्चर, हम लोग स्ट्रक्चर को समझ लेंगे, वी हैव इनफ टाइम, डोंट वरी ऑन दैट। ओके, आई विल सी यू टुमारो 7:30, बाय बाय, टेक केयर, Bye, sir. Thank you. Thank you, sir. Bye. बाय। थैंक यू सर, बाय।